Let us start. आपके पास आवाज आ रही है ना? Yeah, let us start. Please be on mute who is not speaking. So today morning we have done the class relating to the YTM. We have done the fixed income securities. We have done the zero coupon bond. We have calculated the holding rate, holding period rate of return. We have calculated the bond annualized return. We have calculated the government investment return. We have calculated the imputed interest income. More or less 20 case studies we have done. And now we are going to do case study number 21. So let us start. Is everyone on with their Excel? And let me share the screen also. Is my screen visible? Yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Yeah, let us start without wasting time. It's already 7:30. So suppose Mr. X treasury bill for rupees 9940 maturing is 91 days. This we have done already, right? This case study we have done in the morning. 2.44 and 2.40 answer is coming. This we have done. We are on the, I think this is the one coming in the Mr. Murthy. This is the one 3-year maturity zero coupon bond is currently sold at 816. Its maturity value is 1000. Find its duration. YTM is 7%. So let us calculate this. So what is the duration? So let us understand first what is the duration. So duration is the weighted average time to receive the present value of the bond. So we have to calculate the present value of the inflows and in how much time we will get the investment back. That is the duration. So in how many time, in how much time period we will get our present value back. So the weights are the present value of the payment using the bonds YTM as the discount rate. We have to calculate the duration, and duration is also called as Macaulay duration. So two bonds with similar maturity but different coupon rate and inflow patterns will have the different durations. So we will do this theory. The only part is the duration is the weighted average time. So if there is a 3 years to maturity, it's a zero coupon bond currently sold at 816. Maturity value is 1000. Its duration is given, YTM is given, that is 7%. What is the present value? $816.29 is the present value. Now what is the duration? So it is also given, 816 is the value there. We have to multiply the present value with the, give me a minute please. Yes. So this is the PV into period. We have to calculate for each period. Normally duration for zero coupon bond is 3 years. So it is always equal to the maturity period. So duration of the zero coupon bond is always equal to the maturity period because there is no weighted average. There is only one inflow and PV is 1. So we calculate this and it is always equal to maturity period. This is the MCQ question also they can ask. So that is the purpose, this MCQ concept to be cleared.
Next, Mr. A is planning for making investment in bonds for one of the two companies, X Limited and Y Limited. The detail of these bonds is as follows. X Limited 10,000, Y Limited 10,000, coupon rate 6%, 4%. Both have the same maturity period. So period 1, 2, 3, 4, 5. Coupon rate is 6%. So 10,000 into 6%. Maturity is 10,000 at par, 10,600. Right? And what is the YTM? We have to calculate so that we can calculate the discount. So currently it is traded at 10796.80. This is the X Limited. So what is the YTM? Are we solving with me or not? Is everyone solving with me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 4.20. If I'm fast, please let me know. And if you are fast, please let me know the answer also. 4.20 is the YTM. We have to discount it at 4.2. PVCF at the rate 4.2%. This divided by 1.042 power. Right. What about Y Limited? Y Limited is both now in Y Limited, they have given both the bonds have the same YTM. So we need not to calculate the price. There is no need as of now. So we have to calculate the inflow. Inflow are 400. 10,400. Equal to this divided by 1.042. So 1.42 is there. Now we have to calculate the duration of both the bonds. So duration of both the bonds means first we have to calculate the PVCF in PV into period, which is so what does this mean? That duration of bond of X Limited is 4.48 years. That is that if you invest in the bond of X Limited, you will get the present value of bonds in 4.49 years. And if you invest in the value of Y Limited, you will get your money back in 4.63 years, the present value. So 4 years full, but 4.49 and 4.63. So which bond is better to invest? 149. 4.49. Yeah, so lower duration is always better for the bond line. So duration of the X Limited is 4.49. Answer is C. And duration of Y Limited is 4.63.
Based on the each bond, Mr. A will invest in X Limited. So this is a one MCQ question will be there, that lower bond you will invest in the bond which has the lower duration. Next question. Question 24. The following data is 4.49, sir. Can sorry. you explain that 4.49, how it has arrived? Yes, sure. There are steps in the duration. So next questions we are doing for the duration, macro duration, effective duration, and normally one question will come out of this type. So till now we have calculated the present value, right, of the bond. This will give me, so we have the inflows, we have the outflow. With the help of these inflows, we are calculating the value of bond, intrinsic value of bond, or current market price of the bond. So current market price of the bond is 10,797. In the morning, we have done ample exercise to calculate the value of bond. Now we have to calculate the duration. Duration is the period in which I get back my present value of money. So present value of money, say this is like coming to, okay. So we have to multiply present value with the period and do the sum. So sum of the PV into period divided by present value of the bond will give me the duration of the bond. Okay, sir. So in the concepts also, if you see, you can find out the formula for this. So we can write sum of PV to period divided by value of bond. This is the duration oblique Macaulay duration. Clear? Following data is available for a bond. Face value 1000, coupon rate 16%, year to maturity is 6. Redemption value is 1000, yield to maturity is 17%. So coupon rate is 16%. Coupon rate means interest rate, and yield to maturity is 17%. It is a discount rate. What is the current market price, duration, and volatility? Calculate the expected market price if increase in required yield by 75 basis point. So we have to calculate the volatility after this. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 years is the maturity period. Face value is 1000. Coupon rate is 16%. So 160 will be the inflow every year. 1160 is the maturity. What is the discount rate? PVCF at 0.17. What is yield to maturity? Divided by 1.17. What is the PV into period? What is the duration? 4.24. 4.24 is the duration. Duration if divided by 1 plus, so volatility is equal to duration divided by 1 plus YTM. So what is the YTM? 1.17. Clear? This is the volatility. So what does the volatility give? Volatility give me, you can write down 1%.
सर लास्ट वाला स्टेप रिपीट कीजिए ना एक बार। Yes, please. Yes. Tell me. This one, volatility wala. हाँ सर, हाँ सर। Okay. So in the bond valuation, volatility is duration divided by 1 plus YTM. So you have to calculate duration first. You have to calculate the PVCF value of bond you have calculated. Then all the present value factors are multiplied by the respective periods. We have to sum. So we will get the duration, which is this. And if we divide duration by 1 plus YTM, then we will get the volatility. Volatility is basically what? 1% change in 1% positive change in YTM. Value of bond will decrease by volatility. That is 3.62% in this CS24A. सर कर्सर लेना ना उसके ऊपर जरा। ये लीजिए, ऊपर आ जाएगा। नहीं नहीं, उसके ऊपर वोलेटिलिटी के सामने। ये आ गया सर। अच्छा, ओके, यू वांट हियर? यस सर, ओके ओके, थैंक यू। So if my volatility is, if my bond value is 964, right? So if it reduces by 0.75, 75 basis point we have done in the first class. You remember? What is the meaning of 75 basis point? 75 divided by 100. Yeah. Means 0.75%. 75 divided by 100 will be 0.75. Who has given the answer? 75 basis point. Who has given the answer? Sachitanam. Yeah, Chitanji. So is it 75 by 100? 0.75? 0.75%. 0.75%. It's not 0.75. 0.75 will give you the 75%, which is wrong. So 100 basis point is equal to 1%, and 1% is 0.01. This we have discussed in the first class. So we normally make this mistake in the exam. क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है, लेकिन जल्दी वाली पे गलती यही करते हैं। 100 बेसिस पॉइंट वाला अभी आया था, राकेश जी बता रहे थे। हाँ, 100 बेसिस पॉइंट पर क्वेश्चन आया था। यस यस यस। आज ही। तो वो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता भी है, सब कुछ आता है, लेकिन जस्ट एक नॉर्मली कंसेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा, या फिर हम जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। So it is 0.75%. So they are asking, what is the current market? So current market price is what? 964. Clear? What is the duration? 4.24. What is the volatility? 3.62. And what is the expected price if the yield required is 75 basis point? So अगर 1% increase होता है तो 3.62 will be reduced. अगर 0.75 increase होगा तो कितना प्राइस डिक्रीज होगा? 2.71%. So we will reduce the price by 2.71%. We will reduce the price by 26 rupees. Answer will be 938. Is this clear? The relationship between duration and YTM and value of bond. Volatility, YTM and value of bond. Is it clear? Or shall I repeat? अगर 1% repeat once, sir.
तो वोलेटिलिटी का मतलब है अगर मेरा 1% YTM चेंज होता है, then my value of bond will change in the reverse direction by 1%. So there is a inverse relationship between volatility and YTM and volatility. 1% YTM चेंज होने से 1% वोल्टिलिटी रेशियो में मेरी वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिवर्स चेंज हो जाएगी. तो क्वेश्चन में पूछा है 0.7% से क्या होगा, 75% YTM बढ़ रहा है, then what will be the price? So price will decrease by 0.75%. This is 3.63. So अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1% अगर बढ़ता है, if it is changed by 1%, my bond value will decrease by 3.63%. If my value is increased by 0.75%, it will change by 2.72%. यहां तक क्लियर है? Is this clear? कि 2.72% जो आया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल है. इसके बाद कि नाउ देयर इज ए इंक्रीज, तो प्राइस विल डिक्रीज. सो 0.75% अगर YTM इंक्रीज होती है तो प्राइस विल डिक्रीज बाय 26 रुपीज. एंड द न्यू प्राइस विल बी 938. क्लियर? सो ड्यूरेशन बॉन्ड के अंदर first again I am repeating, first we have to calculate value of bond, intrinsic value जो क्वेश्चंस आते हैं, then calculate YTM, calculate holding period return, then we have to calculate duration or Macaulay duration, both are the same. Then we have to do this volatility, and the another one we have to do effective duration. Or convexity. Is a technical word, or they may ask to calculate the key duration. So this is also the theoretical question, practical question they may ask. So what is that? So now we have calculated this. Come to the next question. So now we will calculate this. Now read this. Duration is the weighted average time to receive the PV of the bond. Present value of bond को receive करने के लिए जितना weighted average time लगता है वो duration कहलाता है. For that purpose we have to multiply present value of bond with the respective periods. We have to sum all the weights and divide by the weight. Weight is the present value of bond, total of present value of bond. Two bonds with similar maturity but different coupon rate and flow pattern have the different duration that we have done in problem number 24, 22. Two bonds with similar maturity but different coupon rate and flow pattern will have different durations. Volatility. What is volatility? Volatility refers to the sensitivity of the bond price to change in the current interest rate. The intensity of the price sensitivity depends on the bond's maturity and coupon rate of the interest. Longer the maturity of bond, higher will be the sensitivity of the interest rate changes. Similarly, price of bond with low coupon rate will be more sensitive to interest rate changes. So these are the theoretical MCQ. They can ask about this volatility. What is the volatility relationship, inverse relationship between the present value? What is the duration? That two bond with the similar maturity. So which one you have to choose? 1 mark normal question will be there. Now
problem number this. So here it is, some MCQ are there. So sale or purchase of the bond on the basis of bond duration. So bond duration जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा बॉन्ड प्राइस में चेंज होगा. जितना बॉन्ड ड्यूरेशन कम होगी उतना वोलेटिलिटी कम होगी एंड चेंज इन बॉन्ड प्राइस भी कम होगा. इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between duration, volatility and change in bond price. Interest rate expected to be lower. अगर इंटरेस्ट रेट कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा. And bond of higher duration should be bought and bond of lower duration should be sold. अगर इंटरेस्ट रेट मुझे बढ़ने की उम्मीद है आज के दिन कि आगे जाकर के मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो bond price will decrease because expected interest rate is my discount rate. तो डिस्काउंट रेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा मेरा बॉन्ड का वैल्यू कम हो जाएगा. वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल डिक्रीज. इज दैट क्लियर? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड प्राइस उतना कम हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, नॉट द कूपन रेट. दिस इज द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट. तो दिस 17% अगर 18 होता है तो मेरा वैल्यू ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा. Now coming to the next. Mr. Sujay, yes please. Expected interest rate is just like a discount factor. This is a discount factor, right? So morning also we have discussed coupon rate and expected rate of return, both are the different. If expected rate of return is not given, then discount rate we have to take YTM. तो उसी प्रॉब्लम में अगर डिस्काउंट रेट का जगह में फिर कूपन रेट अगर बढ़ाने से व्हाट विल बी द इफेक्ट सर, उसका थोड़ा दिखा दीजिए. किसमें? इसके अंदर कूपन रेट बढ़ेगा तो आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा. सपोज इफ इट इज 160 राइट and duration is 4.24. if we have the 17% right, everything remains the same. So it will reduce, duration will reduce. Earlier it was 4.24, now it is 4.2. 4.2. Okay, 4.2. Then what about bond value, sir? Bond value increases. Yes, Obviously, because my inflows are increases, then bond value will increase. But if my expected interest rate, that is 17 की जगह, if it will come 18, so अभी 1000 rupees है, उसके बाद ये कितना होगा? It will reduce to 965. So expected rate of return अगर increase है तो bond price will decrease. And ये normal coupon rate increase करने से bond price will increase. Sorry, coupon rate increase होगा तो obviously bond price increase होगा. Yes. It's a direct relation. Coupon rate increase करेंगे तो bond price increase होगा. Higher the coupon rate will be, higher the price will be, and your duration will be lower. Yeah. So let us do the, and now what is the convexity key duration? So in the convexity, I believe it will come later also. We will do then the convexity, but let us do in this question also. What will be the convexity or the key duration? They may ask the Q duration also. So if my price will increase by 1%, suppose my price will be 18. Abhi 17 So if we take price by 0.18, if we take price by 0.16, right, and I will find out the value 1.18. So at 18%, this will also prove the concept that if my expected rate of return
and if it will decrease, so if my expected rate increase, value of bond will decrease, and if my expected rate decrease, value of bond will increase. But what is convexity? Convexity or key duration or modified duration is what? Price of bond at reduced value plus, let me put the formula from here. There or not? So what is the price at negative is 9, negative is 1000, right? 1000 minus 930 divided by 2 into, can anyone tell me what is the price at 0? 964. Now this you have to answer. What is the change in YTM? 2%. Anyone else? Anyone else? What is change in 3.6. ITM? Sorry? 3.62. No, change in YTM. What is change in YTM in this formula? What we have done? We have done from 17 to 18 and 17 to 16. It's 1%. Sorry, it's 1%. Yes. 17 to 18 and 17 to 16. Right. So we have 1. 1% only, right? So this is the key duration or modified duration, 3.63. So 3.62 is the volatility. That with 1% change in YTM, what will be the effect on my value of bond? This will also give the same, but with a fine tuning the key effective duration. If 1% ऊपर होता है या 1% नीचे होता है, तो this is the formula they have given with little bit more fine tuning. This will come more or less same with a less difference in the numerator decimal numbers. नहीं, ये दोनों कैसे यूज होता है, मतलब कहाँ पे यूज होता है अलग अलग? एग्जाम सर मुझे तो आता है एग्जाम में यूज होता है. जब एग्जाम में अगर की ड्यूरेशन या मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोला है, then we have to calculate by this formula. Answer is same. Yeah. Answer is not the answer is almost same. Almost same. Yeah. Almost same, right? मगर ये अलग है, वो अलग है. तो इसका और कुछ फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं है ना? किसका? पहले वाला ड्यूरेशन का नहीं, इसका फॉर्मूला है ना 1 plus YTM. So यहाँ पे आप there is the 1 plus 1 divided by this duration divided by YT 1 plus YTM is the formula. हाँ 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 वो है. इसका जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव हुआ? किसका? मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जो की आप बोल रहे थे ना की ड्यूरेशन बोल के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी सेम है कि अगर 1% आपका प्राइस कम ज्यादा होता है तो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आएगा. इसका आगे एक सवाल आएगा, उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी. अच्छा ठीक. Sir, it is like this.
that the curve which we draw is Yeah. not a straight line, Right. and it's a convex to the origin. Right. Since it is convex to origin, the slope of the curve is different at different points of the curve. Right. So when we calculate the modified duration, which is duration divided by 1 plus YTM, then it calculates in a roundabout manner. It does not give the correct result. So more correct result is given by the key rate duration or convexity. That gives the more better result. That's the only thing, because the slope is given at a particular point and not the general slope. Yeah. So you want to say that our duration will be like this and duration will be like this, right? It's a round Yeah. shape and it's not a straight line. With the duration, we will get a volatility, we will get a straight line, but with the key rate duration, we will get like this, right? Yes, sir, something of that sort. Yeah. Clear. Thank you, Dinesh. Key rate duration Yeah. gives the slope with reference to two specific points, Yeah. and the modified duration gives the slope in general, Okay. average slope. Thank you, Dinesh ji. Thank you, Dinesh ji. So now coming to convertible bond. This is the next concept in the bonds. So Messrs. Reliance Industries has issued earlier 11.5% convertible bond of face value of 1,000 maturing in 2007. After a period of 3 years, on the option of investor, each of these bonds can be converted into 50 equity shares of face value of rupees 10 each. The investment value of similar non-convertible bond is 870. The current market price of bond and the share of rupees 970 and 18.50 respectively. Dividend per share is 2.12. You are required to calculate conversion parity price of shares. So what is the current price of the share? So let us write down some major values here. So coupon rate of the bond is 11.5%. Value of convertible bond is 970. Value of non-convertible bond is 870. Then face value of bond is 1,000. After 3 years, these bond can be converted into 50 equity share. Conversion ratio is 50:1. Then investment value in similar bond is 870. Current market price of bond is 970. Dividend per share is 2.12. Now, what is the conversion parity price per share? The conversion parity price, इसका मतलब है कि अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस होगा 19.40. मैं 50 शेयर लूंगा 970 में, तो मुझे कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मिलेगा 19.40 का एक शेयर मुझे बॉन्ड का मिल रहा है आज. एंड व्हाट इज द कन्वर्जन प्रीमियम आई एम पेइंग? 9.4. Sorry, conversion premium, because I can get these 50 shares market price of shares will be, that is also given, no? 18.5. Market price per share. So from the market I can get 18.5 into 50.
that is 925 I can get. So what is the all shares, converted shares, and I am paying 970. Conversion premium will be 970 minus 925. सर ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कैसे कैलकुलेट किया एक बार बताना। Yes, conversion parity price formula I have given already in the notes. But conversion parity price का मतलब क्या है कि मैंने आज बॉन्ड लिया 970 का, जो मेरा बॉन्ड वैल्यू है that is 970 करंट मार्केट प्राइस, और उसको आज मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 50 शेयर्स मिलेंगे। So 50 970 divided by 50, तो पर शेयर का प्राइस मुझे 19.40 आई विल पे पर शेयर। ओके सर, ओके। Right. Market price of all, then conversion premium. What is the conversion premium I am paying? I am paying 45 rupees as the conversion premium. For 50 share per share, conversion premium will be. So in MCQ they may ask, what is the total conversion premium? What is the conversion premium per share? Or what is the conversion premium ratio? So conversion. Sir, how you got this 925, sir? Market price of all shares. 18.5 into 50. Okay, sir. Okay. Conversion premium is 45, right? Per share, conversion premium per share. .9 conversion premium percentage. $45 divided by 970. 4 point. So 45 by 925 we have to do. Conversion premium ratio is the conversion value से जो conversion premium पे किया 925 का रेशियो है, तो 925 के ऊपर आई एम पेइंग 4.85% हायर। I am paying 4.86% higher on the 925. Now what is the conversion premium per share we have done? सर ये conversion premium percentage कैसे कैलकुलेट किया? Yeah, so this is calculated as the CMP of CB, which is 970 minus 925, 45 will be the conversion premium divided by market price of all shares 925. ओके सर। 45 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ 925 रुपए पे, तो कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज आ गया। Clear? Yes sir. Yeah. So now next point is premium over percentage value. We have already done a favorable income differential. How to stop this? Yeah. So premium or investment value is favorable income differential. I'm not able to do without this.
will be the interest income minus dividend per share multiply by conversion ratio. What does this mean? कि फेवरेबल इनकम क्या है कि मुझे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है कितना? What is the interest income I am getting? 11.5% coupon, sir. 115 रुपए. And what will I get on the 50 shares? 106. So what is the differential? ₹9. What is the per share? 18%. 0.18 per share is the absolute terms. सर ये 150 कहाँ से वर्कआउट किया? 15%, 11.5% into 1000 interest income. ओके So bond पे मुझे इनकम मिल रही है 115, डिविडेंड पर शेयर इनटू कन्वर्जन रेशियो है 106, डिफरेंशियल जो है दैट इज द फेवरेबल इनकम ऑन द बोर्ड दैट इज ₹9 आई एम गेटिंग. Now break even period. What is the break even period? Conversion premium divided by favorable income differential, that is ₹9. So conversion premium is 45. Five years is the my break even period. What does this mean? कि मैं आज अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे ₹9 इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, 3 साल बाद अगर मुझे शेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे कम से कम 5 साल तक ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैरिटी आएगा कि मैं महंगे रेट पे अपना शेयर खरीद लूं, उनसे ऑप्शन कन्वर्ट करूं. अदरवाइज इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी टू गो फॉर द कन्वर्जन. So I can go for the conversion after 5 years because my break even period will be this. After that, I will earn such a income that in advance that I can convert into shares depending on the rate on that date, interest rate on that date. And we are presuming that the market price of share would neither Yes. increase or decrease. Yes, yes. Other things remaining the same. Yes, sir. Other things remaining the same. सर ये डिवाइड 106 से किया है क्या इसको? नहीं, किसको? 5 ये ब्रेक इवन पीरियड 5 वर्कआउट. नहीं नहीं, 45 divided by 9. ओके Conversion premium divided by favorable income differential. राइट. Clear? Now next. GHI Limited AAA rated bond has issued fully convertible bonds on the following terms. Face value of the bond is 1000, coupon interest is 8.5, time to maturity is 3 years, interest payment annual, principal repayment at the end of bond maturity, conversion ratio is 25 shares per bond, current market price is 45, market price of convertible bond is 1175. AAA rated company can issue plain vanilla bonds without conversion option at the interest rate is 9.5%. So what is the straight value of the bond as on today? So one is the value of bond. What is the value of bond as on today? अगर कोई भी इसमें conversion factor नहीं है, कुछ नहीं है, so what will be the value of bond? Plain vanilla. Period 1, 2, 3. Rate is 9.5%. Then PV CF at 9.5%. Inflow is 85. 8.5% है 85. Then 1085 because redeemable at par.
मॉर्निंग में सब ज्यादा जोश में रहते हैं, अभी कोई आवाज ही नहीं आती है, सब थक गए हैं। सर मेरी अटेंडेंस तो शाम को ज्यादा बढ़ेगी, पूरा अटेंड करेंगे, मॉर्निंग में सोने का भी समय रहता है। 975. So first question is state value of bond. Now conversion value of bond. What is the conversion value of bond? $25 shares into market price. $11.25. Conversion premium. What is the price? Market price of the convertible bond is 1175. yeah. So what is the conversion premium? Market value of bond minus जितना शेयर उसको मिलेगा, 50 में प्रीमियम पे कर रहे हैं, 1175 में उसको शेयर मार्केट में मिल रहे हैं 1125 के, बॉन्ड मिल रहा है 1175 का, वी आर पेइंग द प्रीमियम ₹50, तो ₹2 पर शेयर। रेशियो में 50 डिवाइड बाय 1125, 4.44%। Now percentage of downside risk, और पहले conversion parity price, this is easy. Conversion parity price. What is the conversion parity price? 1175 divided by 25, ₹47. Downside risk, percentage of downside risk is what? 1175 minus 975 divided by 975. ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा वरना कुछ नहीं आएगा। मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ द प्लेन वैनिला बॉन्ड डिवाइड बाय क्योंकि उसको प्रीमियम मिल रहा है कन्वर्टिबल का। You get the point? So 20.51 is the difference between the NCB bond and convertible bond value. So 20.51% is the downside risk. Clear? Can you explain from the conversion premium ratio? So conversion premium ratio is that what are you expecting? The ratio. The conversion premium is 50, value of bond is 1125. So ratio is simply 4.44%. I am paying 4.44% higher than the current market price of the shares. So that is the conversion premium. कि मुझे अगर कन्वर्टिबल बॉन्ड खरीदना है तो मैं शेयर्स की रेशियो से 4.44%, शेयर की वैल्यू से 4.44% ज्यादा पे बॉन्ड को खरीद रहा हूं आज के दिन।
Understood. जो शेयर का प्राइस 45 रुपए आज, मैं उसको अगर कन्वर्ट करूंगा 3 साल बाद तो 47 रुपए का होगा पैरिटी प्राइस में। तो मैं उसको 4.44% ज्यादा रेट देके आज ले रहा हूं, दैट इज द कन्वर्जन प्रीमियम रेशियो। और नीचे कितना जा सकता है? नॉर्मल रेट 975 है, मेरे बॉन्ड का रेट 1175 है, तो 20.51 इज द डाउन साइड रिस्क। सर ये कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कैसे एक बार बताइए प्लीज। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस इज द market price of the bond divided by number of shares I will get। 25 शेयर लेने के लिए आज मैं 1175 रुपए दे रहा हूं, देयर इज ए 47 रुपीज आई एम पेइंग पर शेयर। राइट सर, राइट। तो अगर 47 रुपए पर शेयर का रेट है तो मेरा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है, आई एम इक्वल, चाहे मैं बॉन्ड खरीदूं या शेयर खरीदूं, आई एम एट पार, बट आई एम पेइंग द प्रीमियम। So that premium is 4.44% the premium I am paying, कि अगले 2 साल बाद ये शेयर अच्छा रहेगा तो मैं आज ही इसका प्रीमियम देके खरीद रहा हूं। This question we already done in the morning, I think so. Please do it again. Not the same, but similar questions. Sen acquired at par a bond of 1000 that offered 15% coupon rate at the time of purchase of bond, had 4 years to maturity. Assuming annual interest payment, calculate Sen's actual yield to maturity if all interest payments are reinvested in an investment earning 18% per year. What is the difference in this question? सर ये 20.51 Yes, this is a downside risk. हाँ बट मैं कर रहा हूँ तो अच्छा ब्रैकेट लगाना। हाँ, मैंने कहा था ब्रैकेट लगाना वरना कुछ नहीं आएगा। मैंने पे फॉर्मूले में लगा दी थी। ठीक है सर, ठीक। तो एग्जाम में 1-2 नंबर तो पेशेंस के मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस के। या सो नेक्स्ट इज, क्या गैप है दोनों में? नॉर्मल जो क्वेश्चन हमने किया है और अभी जो क्वेश्चन आपके पास आया है, री इन्वेस्टमेंट से। री इन्वेस्टमेंट, राइट। 1 2 3 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे वाला एक 29 का है। दिस वन 29। ये वाला इसमें when we will get, they are, he is saying कि we need to calculate the intrinsic value of the bond and expected price of bond in the, sorry, so we have to calculate the value of bond, assuming all the interest payment we will reinvest at 18%. So when will he get the full amount? So at the 4-year end, he will get what? He will reinvest this 150 rupees. So this is 150 rupees he will reinvest, right, at 18 rupees, right? At the second year, he will get the 18% interest on this, 27, right? Next year,
he will get So, sorry. So first year he will get 150 rupees. Second year he will get 150 into 0.18. 27. First year he will not get any interest. Second year he will get 27 rupees. Third year he will get 150 into 0.18 power 2. 2 साल का ब्याज 4.86. oh, Sorry. ब्रैकेट लगेगा सर? ब्रैकेट लगेगा सर. नहीं. Yeah, it is right. 1.11. This is the total interest I will get. This is the interest on this year. This is the interest on this year. This is the interest on this year. And this is the interest on the third year I will get. We will get this much, 150. The total interest we will get 782. Total amount we will get 1782 at the end of year 4. What is the YTM? YTM will be 15.54%. so for this we have direct to formula in Excel, no, sir? Sorry? For this one reinvestment, directly we have one formula in Excel. I'm not aware of that. There is a formula in Excel, no doubt, Okay, sir. for the reinvestment. I will find out and give it to you. Yes. Yeah. Question number 23. ABC Limited issued 9% bonds of rupees 1,000, each having a maturity of 3 years. The present rate of interest is 12% in 1 year tenure. It is expected that forward rate of interest for 1 year tenure is going to fall by 75 basis point and further by 50 basis point for the very next year in further for the same tenure. This bond has a beta value of 1.02 and is more popular in the market due to less credit risk. What is the intrinsic value of bond? So there are these type of questions we have done in the morning, right? 0.12, then 0.1125, and then further down 0.1075. These are the 3 year interest rates. 1, 2, 3. याद आया? 90, 90, 90, 100, 1090. We will get. What is the present value? 90 divided by what is the discount rate? 0.12.
90 divided by discount rate is 1.12 multiplied by 1.1125. Here again, basic this full concept is there, is equal to this divided by 1.12 multiplied by 1.1125 1075. सर ये तीन अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई क्यों किया? .5 is the, and what is the expected? Beta is 1.02. Beta is the risk factor. So if market price is 942, then price will be higher because there is a, its beta is higher than the normal market rate. So 1.02, then market price is 961.32. 0.02 is the risk involved or better differential from the market. So this beta issue is not clear. What is the relevance of beta here? No. हाँ, equity valuation में beta आता है. Beta is what? Beta is with respect to market, how much volatile you are. Yeah. So this bond is also volatile to the market. Not is 1:1 risk. Bond का भी market में risk factor होता है ना. तो 10% पे कितना risk है? Normal risk free rate is 5% or 6% or 7%. But your bond is given 9% or 10%. उस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट हो सकते हैं बॉन्ड के. So that means if beta is 1.02, so that means it is more volatile. So yes, then it should be at discount to it is mentioned less credit risk, more popular in the market due to less credit risk. So 1.02 is favorable to it. Okay, sir. It is exposed to less credit risk than market. सर ये 942.5 पे कर्सर लीजिए. ये लीजिए सर. ओके थैंक यू. तीनों का सम है सर. On 31st March, yeah. 34 sir. 37. 34. 34 is okay. ABC Limited has raised 50 crore through an issue of 9% bond. Each bond has a face value of ₹500 and 10 years term to the maturity. As per the terms of issue, each bond is redeemable in 4 equal installments. इसमें सिर्फ एक ही फर्क है. ये सब आप सवाल करके मुझे आंसर बताइए. इसमें सिर्फ एक ही चीज है कि ये जो है पार्ट्स में रिडीम हो रहा है. वेरी सिंपल. What is the interest rate for 7th year? तो करेंगे 7th year से आपका 1/4 रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएगा. तो my inflow of the principal amount will start from 7th year. What is the interest for 7th year? वो घटता जाएगा. 33.75 सर. For which year?
सेवंथ ईयर नहीं, 8th ईयर को जाएगा। Oh. Everyone clear on this? That is the only common mistake we do and do not get the answer. And question solved. Discount rate. %13 दिया हुआ है, 13। रजत जी आपका एग्जाम कब है? 2-4 दिन में है सर। आखिरी तारीख यहाँ पे 17 के बाद नहीं है, 17 को देंगे। 17 को पास हो जाइएगा। भगवान करे। पीवीएफ क्या 13% है क्या सर? सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12%। 13 दिया हो ना एग्जाम इसमें, YTM। हम तो इसलिए बीच बीच में बोल दे रहे हैं कि आपको लगे कि सब लोग एक्टिव है। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। शाम का जो है ज्यादा चलाइए सर, ताकि हम लोग का अटेंडेंस ठीक रहे। ठीक है, आप लोग कीजिए सर। मेरे गुप्ता जी के फॉर्मूले पे मैं रजत जी, इंस्पायर तो हम गुप्ता जी से ही हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इंस्पायरेशन इज फ्रॉम हिम ओनली। और सुबह शाम हम तो दोनों टाइम कर लेंगे, अल्टरनेट डेज पे। एक बार मेरा मटेरियल तैयार हो जाएंगे। सर अभी क्या है कि एक दिन मटेरियल तैयार करना पड़ता है, नेक्स्ट डे हाँ आराम से चलिए, टाइम लगता है। हाँ, बट उससे पहले आप सबका हो जाएगा। बट इट विल हेल्प भगवान करे अदर्स। हो जाए। यस यस, हो जाएगा हो जाएगा Sir, you are doing great job, sir. हो जाएगा। या शैल आई मूव? ये किसका आया अभी? 401। You are required to find out the price of bond. What is the price of bond? 401.10. And what is the current yield? कूपन हमने पहली बार डिवाइडेड देखी। बाय मार्केट रेट। क्या डिवाइड बाय? कूपन माने वही 45 रुपया। हाँ, 45 फर्स्ट ईयर कूपन। यस सर। फर्स्ट ईयर कूपन डिवाइड बाय 11.22%. Clear? On 31st March 2013, the following information about the bond is available. Zero coupon bond is there, treasury bill is there, 10.71%, GOI 2023 is there, 10% GOI 2018 is there. Maturity is 20th June 13. Note this, बीच में है, 30 जून नहीं है। 31st March 23, कूपन डेट 31st March only। 10% जो 5 साल वाले हैं उसमें 2 बार है, सेमी एनुअली। Come to the question. If 10-year yield is 7.5%, what price the zero coupon board would fetch on 31st March 2013? Very simple. $10,000 divided by 1.075. Can I write this? उद्या स्कूल किती वाजता आहे? What will be the annualized yield of T bill is traded at 98,500? ये सुबह किया था हमने सवाल। So it is how many days it is? Number of days.
तो 1500 रुपए इंटरेस्ट है 98,500 पे, राइट. दिस इज फॉर 81 days, multiply by 365 into 81 divided by 81, 6.86%. ये फ्री के नंबर है ये. सर एक बार उसको कर्सर लीजिए ना, उसको 6.686. नहीं, सुबह किया था. आप बताइए राजकुमार जी. नंबर ऑफ डेज कितने आए आपके राजकुमार जी? नहीं, थोड़ा स्लिप हो गया. कोई नहीं, स्लिप नहीं होगा, कोई बात नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. नंबर ऑफ डेज कितने हैं ट्रेजरी बिल में? इट विल बी इन योर बेनिफिट ओनली. अगर ये सवाल आया तो कम से कम आप नहीं बोलोगे. ट्रेजरी बिल में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 31 मार्च से 20 जून तक कितने हैं? 90 days. नहीं नहीं नहीं, 20 जून. सर ये 82 डेज से आंसर निकलता है, लेकिन 81 डेज बनते हैं. हाँ, 81 डेज लिया मैंने. 6.86 सर है. तो 81 से मेरा नहीं आ रहा था. डिवाइड बाय 360 लिया ना सर. 365 गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एनुअलाइज्ड नॉर्मल. हाँ, तो फिर नहीं आएगा सर. सर ये है फॉर्मूला आपके सामने. हाँ, मैं देखता हूँ सर, सॉरी. हाँ, तो राजकुमार जी 81 डेज आपके आ गए. हाँ सर, हाँ सर. तो सिंपल है, 98,500, 98,500 इज माई करंट रेट. 1 लाख रुपए मेजोरिटी में मिलेंगे. आई विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 1500, जी राइट. सर. 1500 आई विल गेट ओवर 98,500. जी. So I will get 1.52% पर for डे. 81 day. For 81 day, not per day. 481 days. 1500 रुपए जो मुझे ब्याज मिल रहा है वो मुझे 81 दिन का मिल रहा है. 98,500 Okay, आज sir. दूंगा. 81 डेज के बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे. 1500 रुपए जो मिला दैट इज फॉर 81 डेज. 365 81 डेज के लिए. days. तो 365 डेज के लिए कितना मिलेगा? सिंपल 5th क्लास क्वेश्चन, 7th वाला. 7th में कैसे करेंगे, या इसको 1 ऐड करके एंड देन वी वुड रेज इट टू द पावर ऑफ 365 डिवाइड बाय 81. सॉरी, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है ना ये. तो ये सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे. हाँ, सिंपल से. ओके, सो effective. So in the morning we have done. So please, in the morning class we have done, let me see, we have given 3-4 terminology here, and option in the question you will get all the options. Compounding वाला भी मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा. Effective annual rate, this is compounding. ओके. This is compounding. Effective annual rate 365 डेज इसमें भी लगेंगे. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न में 360 डेज सिंपल, एंड बॉन्ड इक्विवेलेंट रिटर्न या एनुअलाइज्ड रिटर्न के अंदर सिंपल 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज. ओके, ओके सर, ओके. नेक्स्ट, if 10.71% GOI 2023 bond having yield to maturity is 8%, what price would it fetch on April 1, 2013 after coupon payment on 31st March? Very simple. YTM 8%, डिस्काउंट रेट, कूपन रेट क्या है? $10.1. डिस्काउंटिंग रेट
8%. वेरी गुड। सभी लोग पार्टिसिपेट किया जी कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है। गलती होगा ना, और आपस में क्या गलत ठीक, एग्जाम में ठीक होना चाहिए। पॉइंट 25 तो नहीं कटेगा। एग्जाम में ठीक होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं कटने वाला है, यहाँ पे मिलेगा ही, बोलोगे तो याद रहेगा हमेशा, ये गारंटी है। और साथ में मुझे भी मालूम पड़ता रहेगा, वरना रजत जी को भी ज्यादा तकलीफ करनी पड़ेगी। वो बचपन में कहानी सुनते दादाजी बोलते थे, भैया वो हुंकारे बढ़ते ना, हूं करते रहना, वरना मुझे लगेगा मैं सुनाता रहा और तुम सो गए। जब तक नहीं हुंकारे, क्या जब तक हुंकारे आते रहेंगे तब तक मैं सुनाता रहूंगा, जैसे ही नहीं आए मैं सो जाऊंगा मैं भी। तो जरूरी है वो बोलना। यस सर। चलिए, कूपन पेमेंट वाली लाइन क्या डराने के लिए ऐड करी है? सॉरी, कंफ्यूज करने के लिए ऐड किया क्या? या ब्रैकेट में जो आफ्टर है कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च। कंफ्यूज करने के लिए ऐड हुआ है? यस। वो इसलिए दिया है क्योंकि आपको उस साल का जो है, बिकॉज उन्होंने इशू डेट नहीं दी है इसमें, राइट? सो यू डोंट नो द इशू डेट ऑफ दिस बॉन्ड, दे हैव गिवन यू द मैच्योरिटी ओनली। तो आपको नहीं पता वो 10 साल का है या 5 साल का है। 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2023 तक देयर आर 10 इयर्स रिमेनिंग। तो अगर 31 मार्च 2013 का इंटरेस्ट कूपन नहीं मिला है, देन वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो। फिर 11 साल हो जाएंगे। वो मिल गया तो 10 साल का मुझे मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट। सर ये डी में आंसर बता रहा है 10% GUI 2018 इक्वल टू 108। गलत है। नहीं नोट्स में है सर अपने तो वो। हाँ गलत है, नोट्स अच्छा। इंसान ने बनाई है। हाँ जी बताइए, ठीक आंसर क्या है? अगर ये मेरा कहीं पे आप शेयर करें तो जो क्वेश्चंस के आंसर गलत है वो ठीक कर लीजिएगा, वरना सामने वाला ढूंढता रहेगा। क्या गलती की मैंने? कोई बता पाएगा? अगर कोई मुझे देख रहा तो मैंने क्या गलती की या उसका आंसर ठीक आ गया तो बहुत अच्छा, मेरी गलती बच गई। रेट टू बी डिवाइड बाय हाफ ईयरली पेमेंट है 2 से मल्टीप्लाई करना है सर, व्हाट इज इट? 2 से डिवाइड करना है रेट को, दोनों रेट को, डिस्काउंटिंग रेट को भी और इंटरेस्ट रेट को भी। तो 10% है 2018, हम लोग 13 में है, सो 13 का 2 है, 13 का 1 है। सर
तो ये 5% क्यों लिया है आपने? जनरली एनुअल पेमेंट होता है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, ऑलवेज इंटरेस्ट। इसमें लिखा सेमी हुआ एनुअल, है, फिर वो इसमें 20 इयर्स लिखा लेना हुआ पड़ेगा। है, लिखा हुआ कूपन डेट इज 31 मार्च एंड 30 सितंबर। सर वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी है सर, गवर्नमेंट का जो है जनरली हाफ ईयरली पेमेंट होता है बोल के एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी था सर। ओके, सो एक एमसीक्यू बता दिया आपको मनीष जी ने या मूर्ति जी ने बताया, राइट? सर इसमें 10 इयर्स क्यों ले रहे हैं? कहीं नहीं, मैंने 10 ईयर कहीं लिया ही नहीं। 5 ईयर लिया है, सेमी एनुअली करके उसको 10 इयर्स हो गया। मैंने पीरियड लिया है, 10 इयर्स नहीं है, दैट इज द पीरियड। ओके सर। तो जब जैसा आप लिखोगे ऊपर वैसे ही आपको दिमाग में आएगा पेपर में। इफ यू राइट ईयर तो आपको 5 साल दिखेंगे वहां पे, रेट भी पर एनम लेंगे। तो मेक पीरियड, व्हाट इज द कंपाउंडिंग पीरियड और व्हाट इज द टोटल पीरियड ऑफ इंटरेस्ट यू विल रिसीव। सर वहां पे ईयर्स लिख दीजिए सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो। किसमें? थर्ड वाले में। नहीं, इट इज द पीरियड, इट इज नॉट द ईयर। तो सेमी एनुअल है ना, इसके लिए 10 में कन्वर्ट हो गया ना। चाहे आपका पीरियड कैन बी 1 ईयर, पीरियड कैन बी सेमी एनुअल, पीरियड कैन बी क्वार्टरली। पीरियड मींस in how many times you are getting the payment, cash inflow। सर थर्ड वाले में तो एनुअल ही है। थर्ड वाले में एनुअल है, but we need to make period, period is the annual per annum। I am not going to discount reduce my rate of interest, nor I will adjusted my discounting period। सर फिर ये 10 क्यों लिया सर? सर यहाँ पे सेमी एनुअल है, इसलिए मैंने पीरियड को डबल कर दिया, 5 को 10 कर दिया। थर्ड वाला सर? थर्ड वाले को बिकॉज इट इज 10 ईयर बॉन्ड ना, इट इज मैच्योरिटी इज 31 मार्च 23। As on 31st March 2013, I am calculating majority date is 31st March 23. Okay, sir. That is why I have taken 10 years. Next maturity date is 31st March 18, 5 year. But it is semi-annual, so period is 10. Interest rate will be half, and PVCF discounting rate is also half. So discount rate 4%, no sir? Yes. Period will be double, rate will be half. 38. This question was in my exam. और ये अभिषेक जी के पास भी है, प्रकाश जी के पास भी है, जीवी के राव जी के पास भी है, सबके पास है। सर अभी इसका आंसर आएगा 104 ना सर? 108 किसका? 108.11 108.11 108 तो लिखा हुआ है मैंने, वो नहीं है आंसर, वो गलत है। ठीक आंसर 108.11 है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। अब किसने कर लिया ये? तो काफी लोगों ने पहले किया हुआ होगा। यस सर।
Mr. P would like to invest a zero coupon bond of rupees 150,000 has a term of maturity of 5 years, market yield of 8% at the time of issue. Analyst worked out the issue price, modified duration of the bond, duration of the bond. Mr. P is also interested to know about the percentage change in the price of bond if yield declines by 0.6. In this regard, which of the below of mentioned options are correct? बताइए इश्यू प्राइस क्या है जीरो कूपन बॉन्ड का? नंबर 3 करते हैं 1 2 3 4 5 1.5 लाख ना 1.5 lakh is not the issue price. 1 lakh, sir. 1,02,087. Yes, it is not 1 lakh. It is 1,02,087. Sir. वो निकालना 1 लाख कैसे आया? 1 लाख कैसे आया? नहीं वेट सर 1 लाख कैसे आया? फेस वैल्यू सोचा सर और कुछ नहीं. फेस वैल्यू तो दी नहीं हुई. दिया नहीं. यस. कहाँ दिया है? नहीं दिया नहीं. हाँ तो कैसे आया 1 लाख? वन लाख 50,000 डिवाइड बाय 1.08 and duration of the bond, zero coupon bond, is the same as of maturity. अभी किया था हमने कंसेप्ट. Modified duration is 5 divided by 1 plus YTM. And what if the percentage change in the price of bond if yield declines by 0.6%? So 1% अगर चेंज होता है बॉन्ड में तो वैल्यू कितनी चेंज होगी? 4.62%. अगर 0.6% चेंज होता है तो कितनी होगी? 0.6 into 4.78. क्या होगा? 2.78 कम होगी ज्यादा होगी? बढ़ जाएगी. Yeah, price will increase. Decrease. Price will Increase. increase. So option can be 2.78 increase or 2.78 Decrease. decrease. की आवाज आ रही है, क्लास की आवाज आ रही है. सर म्यूट कर लीजिए. सर ठीक है, सवाल हो गया फटाफट. कोई ये क्वेश्चन पेपर में आएगा परसों 16 तारीख को. सर कर्सर ये इस पे 0.60 पे लीजिए ना. ये कुछ भी ऑप्शन आ सकती है, सवाल यही आएगा ऐसा ऐसा. परसों काफी लोग एग्जाम दे रहे हैं. आज 2 खुशखबरी आई हैं, 3. सर ये कर्सर 0.60 पे लीजिए ना. ये तो सिंपल टाइप किया हुआ है, टाइप की एग्जाम में दिया हुआ सर, ये पेपर में ये रहा. Mr. P is also interested to know about the percentage change in the price of bond if the yield declines by 0.6. राइट सर राइट. ये रिलायंस भी नहीं छोड़ रहा, रिलायंस फिर आ गया. कीजिए 39.
बताइए 6th ईयर में क्या मिलेगा मुझे? हल्का सा चेंज बस यहाँ था। डिस्काउंट रेट क्या आएगा इसमें? 15%. हाउ मेनी देयर आर 15%? बताइए सर, सबमिट कीजिए जल्दी से। क्या डिस्काउंट रेट होगा इसमें? पोल आया आपकी स्क्रीन पे। ओ 50-50 वोट। Please submit fast. 20 participants are there and I am getting only 8 answers. शो नहीं हो रहा। क्या पोल तो शो हो रहा होगा सबको? सर आपकी स्क्रीन शेयर होगी। अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही अब आप आपके सही यहाँ पे अब आ अब तो गया आपको दूसरों का दिख रहा है ना सर। ये तो दूसरों का रिजल्ट है। रिजल्ट है ही नहीं सर, इसमें आंसर नहीं है सर। आंसर नहीं, आप सबमिट करो ना। आंसर तो मैं दे दूंगा। जी सर। 19 लोग अभी हैं, सिर्फ 9 दे दिया है। इतना एग्जाम में टाइम थोड़ा ना मिलेगा। अब तो ना पब्लिक पोल पे चले जाओ यार, जो बच गए। हो सकता है पब्लिक पोल गलत हो, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस भी रखना। 9 बचे हैं। बट कहाँ इश्यू आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो पोल नहीं कर रहे हैं तो या तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है या वो म्यूट करके चले गए हैं खाना खाने। या डबल ज्वाइन कर रखा है। चलिए 10 लोगों ने दिया आंसर, कोई और दे रहा है अभी? तो डिस्काउंट रेट इज द 16%। मार्केट रेट ऑफ वी हैव टू टेक द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी ने बोला है मैं 16% के हिसाब से उसको रिटर्न देंगे, जबकि इन्वेस्टर जो है मार्केट में 15% है। प्राइस किसको फिक्स करना है? कंपनी को। मुझे क्या चाहिए? इश्यू प्राइस। तो कंपनी इज इशूइंग द प्राइस, सो दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कंपनी हैज टू फिक्स द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एट 16% विल बी द डिस्काउंटिंग रेट।
Clear? Sir, just because that is expected by the company, it is a discount rate. Sir. No, this is not expected. Company has to fix the price. Expected return of the investors is 15%, but Reliance हमेशा जो है इन्वेस्टर को जरूरत से ज्यादा देता है, तो उसने कहा मैं 16% दूंगा और प्राइस वैसे ही फिक्स करूंगा। तो मुझे वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू फिक्स करनी है, प्राइस फिक्स करना है। यहाँ पे कैच क्या है? Proposes to price. Sorry. The company proposed to price the issue so as to yield a compounded rate of return of 16%. Right. So compounded तो हमेशा ही होती है, right? So invest to the investor against prevailing market interest rate of 15%. कि रिलायंस बोलता है कि मैं 16% कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से दूंगा, मार्केट में 15% है, पर मैं 16 के हिसाब से वैल्यू करूंगा। तो 16 के हिसाब से वैल्यू करूंगा तो मेरा प्राइस कम होगा मार्केट से, और मैं तुम्हें 5% डिबेंचर का प्रीमियम भी दूंगा। तो मेरा इश्यू प्राइस जो होगा वो 16% में डिस्काउंट होगा, 81.88 होगा। अगर मार्केट में वही लेने जाओगे तो मार्केट में आपको क्या मिलेगा? अगर 5% डिविडेंड भी ले ले, 1.15। So in the market, you will get the same price of others is 85 rupees. Reliance will give it 81.88 rupees. Reliance fix कर रहा है प्राइस 81.88 का, तो लोग ले लेंगे भाग भाग के, क्योंकि मार्केट का इंटरेस्ट रेट 15% है। If decision is there, then decision will be to buy it. It is more than above the market expectation or any investor expectation. But so far as issue price is discounting it. Sorry, we are discounting it. What company is proposing? Discounting it, yeah, because company has to issue it. 4.75 गलत है किसी का, जिसका भी है अभी आएंगे देखते हैं। ओके, 4.75 तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, years, okay, sorry, it's correct. Yeah, so now what is the duration of the bond? 4.75. Yeah. So 7.76 into 1, this, सबका आ गया? Yes, sir. 4.75. What is the volatility? 4.09. 1.0. 4.09. Yeah. And what is the one if YTM increases by 1.2%? 4.91% is downward. Downward. So this is the answer. सर ये 4.91 पे लीजिए ना एक बार। 1.2, ओके ओके ठीक। 1.2 कहाँ से आया सर? नहीं मेरी वो 0.02 ले लिया था, इसके लिए गलत हो। सब यहाँ राजमोहन जी ध्यान रखिएगा, पहली क्लास, पहला लेक्चर, पहला दिन, पहला पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। उस टाइम पे हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं, क्यों बता रहे हैं। 4.09 सॉरी 4.09 ओके 4.09 is the volatility. Volatility is equal to duration divided by 1 plus YTM. अच्छा, ये डाउनवर्ड क्यों होगा? Because there is an inverse relationship between the volatility and price. बिल्कुल बिल्कुल। YTM. तो 4 सवाल लगे कीजिए। 40 ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है आखिरी में। ड्यूरेशन, मैक्रो ड्यूरेशन, फ्री के नंबर है ये, फ्री के। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 10,000, कूपन रेट इज 8.5%, ईयर टू मैच्योरिटी 5 years, YTM 10%। तो डिस्काउंट रेट आ गया आपके पास, ईयर आ गए 1 2 3 4 5, 85 और 850। 850 850 850
850, maturity is 10850, right? Discount rate, अब इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है डिस्काउंट रेट कैसे लेंगे और कूपन रेट में क्या लेंगे, या सबका क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? It's clear, sir. डिस्काउंट रेट जो है वो YTM रहेगा, या दिया हुआ तो वो रहेगा. Yes. If it is not given, then YTM. If it is given, then we will take that expected rate of return. Except Reliance वाले केस में जहाँ पे वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड देता है. $9,431 is the current market price of the bond. First answer. Duration multiply by period. Sum of 4.25. present value 4.25. Volatility of the bond 3.86. convexity of the bond what is the formula? P minus P plus bracket divided by 2 into current price into 1. sorry 1. One. more or less same is coming, right? Now expected market price increase if there is a decrease in YTM by 200 basis point. कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 2%. 7.73. अगर 8% डिक्रीज हो रहा है, कितना कितना? सर YTM 8%. नहीं आंसर दिया किसी ने अभी. 7.73. 18.73. 7.73. 7.73. 7.73 राइट. अब एज पर द 2% अगर या तो इट विल बी डबल बेसिकली. सिंपल. Backward duration, not this effective. Backward duration is this one. सर ये convexity का एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए. Yes. So convexity is basically we have to take one rate downward, one rate upward, then the current one. Clear? Yes sir. And then we have to calculate the present value at those rates. Then we will do P present values, sum of present value at P minus sum of PV at P plus.
divided by 2 into P0 into change in rate, the change in P. P means percentage. हमेशा कम वाले का कम इंटरेस्ट रेट जो होगा उसका ज्यादा पीवी निकलेगा. If discount rate is lower, then value of bond will be higher. If expected rate of return is lower, value of bond will be higher. So P0 minus P minus P plus divided by 2 into P0 into change in the rate. Change in the rate is 10 minus 1, not 2%. इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना है. प्रेजेंट वैल्यू से करंट परसेंटेज से जो चेंज है वो चेंज लेना है. और वैसे कितना आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से? 8.15%. How you got it, sir? That one? How you got it? Yes. How you got it, sir? 8%? 81. सिंपल. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से पूछा उसने कि इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या फर्क आएगा, सो आई जस्ट डिस्काउंट एट द 8%. क्योंकि 10% अभी मेरी वो है डिस्काउंट रेट है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ YTM है. अगर YTM 2% चेंज होती है डाउनवर्ड, so my value of bond increased to 10,200. So which will be the 10,200 minus 9431, which will be 768 divided by 9431, 8.15%. Okay. सर ये मकाला ड्यूरेशन में क्या किया? 7.73 कैसे है? मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टिलिटी को. जो डिफरेंस परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया. No difference. Change 200 basis point. जिससे डिक्रीज हुआ 200 basis point. It is given in the question. Yeah. अगर 1% डिक्रीज होता है तो प्राइस विल इंक्रीज बाय 3.86 एज पर मैकुलर ड्यूरेशन. बट इट्स बॉन्ड ए बॉन्ड बी. मूर्ति जी यही आया था आपके सवाल में आज? मूर्ति जी गए क्या? बॉन्ड ए बॉन्ड बी कुछ बोल रहे थे आज पेपर में आया था. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी आया था नेक्स्ट क्वेश्चन उनका. दोनों सवाल उनके एग्जाम के थे शायद. he left, otherwise he converted. Okay. Two different types of bond A and B. Face value 1000, bond B 0 coupon 10,000, maturity 10 years. पहले में 8% है, issue price 928. Yield to call is there. Very simple. 2 to 1 15-second questions. Let us sort. YTM of bond A. 1 2 3 4 5 6 7 8. Interest rate is 8. Maturity is 1080. Issue price is minus 928. YTM is 9. पेपर 9.13. पेपर में तो 9 दिया नहीं ना. हाँ 9.13. 9.30. Clear. Bond Yes. B 10,000 divided by, sorry, bond B it is not divided by because I have not don't have, we don't have. The price is 4220. You will get nothing. In the 0 coupon bond, you will get 10,000 rupees.
IRR will be 9.01. Bond A. You will get third year 1100. Nothing is there. Equal to IRR. This you have done in the morning also, right? 2 decimal. Bond B, 5 year. At what price? 6230. Easy. Bond A, 6th year. $9.77. Based on YTM, which bond is better, A or B? A. Yes, A is giving the higher rate of return, so A is better. Probability of default. This question is also there in your equity valuation or certainty equivalent approach. But for bond, certainty equivalent approach is equal to probability of default. So global crossing has 12% rate. Bond with 8 years to maturity. Annual probability of default is 10%. Risk-free rate is 5%. Okay. और इस वाले क्वेश्चन में उसने नहीं दिया है. So पहले हम क्वेश्चन करें probability of default का. Just pay attention for the next 10 minutes, then we will end the class. And this is the important question. Please pay full attention if you have not done this earlier. Right. Shall I start? Yes, sir. Yes. Yeah. So 1, 2. What is the bond maturity? 8 years. Clear? What is the coupon rate? 5%. 5% percentage means 120 rupees interest inflow. What is the probability of default? 10%. Probability of default 10%. So every year, what is the cumulative probability of default? कि इतना पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि आपका कैश फ्लो जो है 120 है, but at what interest? 12%, right? At the rate of 12%. And what is the interest free, risk free rate? 5%, right? ये आपको बाद में भी काम आएगा, पर अगर मेरा इक्विटी का सेशन आपका 16 तारीख से पहले नहीं हुआ, वो सवाल नहीं आया तो आपको वहां भी काम आएगा. तो रिस्क फ्री रेट इज 5%. इसके अंदर जो है जैसे 120 आप निकाले हैं, लेकिन 1000 वैल्यू है, ये कहीं है नहीं क्वेश्चन में, शायद ये मिस हो गया है क्या? नहीं सर, वैल्यू सॉरी, जैसे हम लोग का उसका राइट, तो वो एज्यूम किया है, यू आर राइट. हाँ सर, एज्यूम किया. आप 100 रुपए भी एज्यूम कर सकते हो तो 12 रुपए आ जाएगा. सर डेट वैल्यू दिया था एग्जाम में क्वेश्चन में. सॉरी, डेट वैल्यू दिया था क्वेश्चन में. डेट वैल्यू दिया था मतलब 1000 रुपीज. नहीं सर, थोड़ा ज्यादा सर, 12 मिलियन ऐसा कुछ दिया था सर. नॉट एबल टू गेट इट करेक्टली. ओके,
but we will take the face value. So risk-free rate is 5%. They are offering 12%. तो 7% जब ज्यादा देते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रिस्क है बॉन्ड में, वो ए रेटिंग होगा, बी रेटिंग होगा, तभी मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो उसका डिफॉल्ट का चांस भी होगा। तो उसने कहा 10% डिफॉल्ट का चांस है, पहले साल में डिफॉल्ट करेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल इंक्रीज विद द passage of time, with the increase in time, and probability of certainty will decrease, right? तो कितना सर्टेन है कि मुझे ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा? 0.9 first year. 0.9 first year. Very good, sir. So how you calculate this? 1 minus 0.1. 1 minus 0.1 की पावर, एक साल में मुझे मिलेगा इतना पैसा पक्का। दूसरे साल में 0.81 डिस्काउंट होकर के 81, मतलब 80% नहीं होगा। दैट इज द क्रक्स ओनली, कि दूसरे साल में प्रोबेबिलिटी, एनुअल प्रोबेबिलिटी जो है 10 और 10 20 नहीं होगी, दैट इज आल्सो डिस्काउंटेड। तो 10 साल ये वाला 9 और आगे फिर 10 तो 81% होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द प्रोबेबिलिटी and this is the certainty, cumulative, कि इतने चांस है कि 81% तो मुझे मिल ही जाएगा। तो सर्टेन कैश फ्लो कितने हुए? सर्टेन कैश फ्लो जार 120 का 90%, I will get this much cash flow certainly, right? 1045 is the मेरा दूसरे साल में 0.82 आ रहा है सर्टेनिटी फैक्टर। 0.82 आ रहा है। तीसरे साल में देख रहे हैं, एक सेकेंड, तीसरे साल में आ रहा है 0.75। क्या गड़बड़ी सर? एक बार वो सर्टेनिटी फैक्टर पे लीजिए ना उसको, कैलकुलेशन पे। ये लीजिए, नहीं उधर नहीं, सर्टन पे कैश नहीं, इसमें सर्टेनिटी। 1 माइनस, अच्छा हमने 1 प्लस किया है। हाँ, प्लस नहीं करना ना सर। सर्टेनिटी के लिए तो 10% डिफॉल्ट होगा, तो 90% तो मिलेगा, और 90% को मैंने डिवाइड किया टाइम, पावर किया टाइम से डिस्काउंट, कि 90% मुझे मिलेगा एक साल में। फिर 90 का 90 डिफॉल्ट के चांसेस है, तो 81% इज द 90 के 90 मिलने के चांस। 81% मुझे मिलेगा सेकेंड ईयर में। 90 इंटू 90 इंटू 90 तीसरे साल में। हमने बाइनोमियल ट्री अप्रोच में किया था कि इफ यू रिमेंबर दैट इन फर्स्ट ईयर आई एम गेटिंग 90% प्रोबेबिलिटी, सेकंड टाइम 90% प्रोबेबिलिटी, थर्ड टाइम 90% प्रोबेबिलिटी, राइट? सो सेकंड ईयर में कितनी प्रोबेबिलिटी, सेकंड लेग पे कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? दिस यू रिमेंबर और नॉट? हमारा अब टैली हो गया, हम वो उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। हो गया, कंसेप्ट समझा? सर कंसेप्ट वही है, माइनस करना था। नहीं, नीचे देखिए, अभी जो हमने बाइनोमियल ट्री अप्रोच किया था ऑप्शंस के अंदर, उसमें 90% मेरी 90% प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं हम लोग। नहीं, 90% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है 10%। पेपर में यही दिया हुआ है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो पहली बार में अगर मैंने दिया, अगर 2 ही ले गए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है अल्टीमेटली? 0.9 इंटू 0.9। यू रिमेंबर वो आपने ट्री बनाया था, पहले साल में 0.9, दूसरे साल में 0.9, तीसरे साल में 0.9, तो मल्टीप्लाई करते जाते थे, देन वी विल गेट द फाइनल प्रोबेबिलिटी। तो थर्ड ईयर में प्रोबेबिलिटी आके 0.9, 0.9, 0.9, थर्ड मंथ में 0.729, तो यहाँ पे वही आ रही है ये। फोर्थ में फिर एक बार और 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिफ्थ में फिर 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स्थ में फिर 0.9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड नाउ क्योंकि मैंने ये सर्टेनिटी निकाल ली है, so I will discount it at what rate? 5%. रिस्क फ्री रेट 5%। Free rate.
What is the value of bond? इसी सवाल में राकेश जी पूछ रहे थे इन्फ्लेशन रेट का भी कुछ आता है क्या? तो मुझे मिला नहीं, मैं देखता हूँ इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चंस में करवा दूंगा। हाँ। तो देखता हूँ आज होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? और मिले आपको तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। हम ठीक है तो सर, खोज लेंगे, मिल जाएगा। 801.6 is the value of bond. Cumulative probability of default at the end of 10th year. 9, 10 कुछ नहीं करना है अपने को, 9 और 10 दो बार और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विल बी 1 minus this 0.651, and then they are asking survival profitability of the project at the end of 12th year। पर अगेन ये डिफॉल्ट ही आ रहा है, वहां पे गलत लिखा हुआ है शायद कुछ। 1 minus 71.2 is the again this is the probability of default only. This should be correct, not survival. Survival will be 28.2। इसको ठीक कर देते हैं। नाउ 42A, इसमें देखिए आप, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। इसमें जो है he has given, he does not have given the probability, so what to do? कौन सीख लगेगा? Yes sir. Now everywhere there is a formula. विनय कान जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। So now we have to use the goal seek. Goal seek कहाँ पे होता है? डेटा में। What if analysis goal seek? ओपन ऑफिस में टूल्स में होता है। To value 653 in the exam 53 by changing the cell probability. 1353 will be the answer. 1353 is the answer. Correct? Cumulative probability of default is, please mute yourself. Who is there? Annual probability of default is 13.53. Cumulative probability of default at the end of 10th year is 76.6, and at the end of 12th year is 17.5. सर ये गोल सिक पे एक बार लीजिए ना, वो प्रोबेबिलिटी कहाँ से मतलब ये किया? जेड करना पड़ेगा, ये लीजिए। एक केस स्टडी 42 भी रेगुलरली आ रहा है सर। डेट ये वाला? हाँ, केस स्टडी 42 ये 0.10 जो परसेंट है इसको मतलब ये किया है क्या प्लस? नहीं, मैं बताता हूँ डेटा पे आइए आप, एक मिनट। व्हाट इफ एनालिसिस कहाँ गया? नहीं, गोल सिक ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो पिकअप किया है उसको मतलब प्लस ऊपर प्लस अपर सेल को किया है क्या, मतलब कनेक्ट? हाँ, अपर सेल को हाँ ठीक है, मतलब नहीं we have not changed, yeah, to by changing cell, so to value 653 and then everything should be formula link. So मैंने सबसे पहले यहाँ पे इन सबको फॉर्मूला रखा है, अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगे। पहले मैनुअल कैलकुलेट किया था, अब इसको फॉर्मूला डाला है, अदरवाइज गोल सीक एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ इसको चेंज कर देगा, बाकी सबको 0.1 रखेगा। अगर ये मैनुअल कर दूंगा मैं, सपोज आई विल कॉपी पेस्ट दिस एज दिस, and now if I apply the formula of goal seek, then it will not work. It will change only this. You understand? Yes sir, yes. So you have to make the formula to apply this. Clear?
So this is, I think we have done. There are certain MCQ which you can read, answers are already given. If there is any issue, we can discuss. This is question, agency bonds are issued by. This is something the new question or there is a, yeah. Tell me. ये आया था सर आज. ये आज आया था. इसको रेड कर आया था देते हैं. सर. इसको रेड कर देते हैं सर. मूर्ति जी वो भी यार ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट या बॉन्ड है, बॉन्ड भी ये वाले थे, दूसरा था कोई? सर ये नहीं है सर, दूसरा वाला है सर. एक्चुअली आई हैड सीन इट समवेयर सर, बट आई डू इट इन द एग्जाम बिकॉज वो एक्चुअली लास्ट मिनट में 8-10 देखने का था, ओनली 4 देखा था, 4 में 2 आया. ओके. तो एक्चुअली ठीक है सर, मतलब लक ऑफ स्ट्रोक ऑफ लक इज मिसिंग. यस सर एमसीक्यू फर्स्ट के अंदर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन भी पूछता है. Yeah, he can ask, has the longest duration. So what is the concept here is shortest duration means shortest time period and highest coupon rate. Longest duration is highest time period and lowest coupon rate. So B will be the answer. If it is longest duration. Clear, sir? So day after tomorrow, what will you do? You want more MCQs on the, do you want to a poll on the MCQ, or you want to start with the equity valuation case studies? Equity valuations. जो आपसे तैयार जल्दी से हो जाए. Right. ठीक है sir. So we will do equity valuation or we will go for MCQ, रजत जी जैसे आप कहेंगे. ठीक है. I will try for equity valuation case studies. Please sir, please. तो 16th को एग्जाम में जाता हेल्प करें सर. Then MCQ we have to do mainly of the, आप वो कीजिए, आप क्या नाम है, परसों वाला सेशन अगर है किया था आपने आरबी वाला. यस सर. तो एक तो वो आप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी जब परसों के लिए करने का फायदा नहीं है. अब जितने आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं उतने एमसीक्यू कीजिए कल. ओके सर. टू बी वेरी फ्रैंक, केस स्टडीज जो है नॉर्मली जो आप करते हैं वो जो आपको वो कर लीजिए. ठीक है सर. और इसमें भी आई विल हाईलाइट द केस स्टडीज इन फ्यूचर which will come in the exams, so that at least, or which are some are repetitive in nature, which will cover the concepts, most of the concepts that can be done. Thank you. Okay, thank you everyone, thank you for the call. Thank you sir, thank you very much. Thank you sir. Thank you.